done day one, and Francis has also done. Okay, Narendra ji has done day one. Very good. I can see that there are 24, 23, 24 people who had done day one yesterday. और आज कुछ लोग नए ज्वाइन हुए थे, उन लोगों ने भी किया है. So good everyone that you are doing. अच्छा, डे टू कितने लोगों ने कर लिया है, अभी सबमिट कर दिया है. We'll be sharing an update also, and we are keeping a track of everything. मतलब जो challenge है, it is going as a challenge, and we are keeping a track of everything. जो आप अपडेट करते हैं, इंस्टा स्टोरी जो शेयर कर रहे हैं, पोस्ट जो शेयर कर रहे हैं, एंड जो लोग लाइव आ रहे हैं. हाँ, except the fifth one is was a little tricky. I will show you how you can do the fifth one also, but yes, day two done except some product. Yes, except some product. Definitely, I purposely put that fifth one because people feel कि अरे सम तो हमें आता है, सम तो हमने बचपन से हम लगाते आ रहे हैं, तो सम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप सिखा दोगे. और उसके बाद नेम मैनेजर में प्रॉब्लम आ रही थी. ओके प्रियांश. Okay, good. So this Zoom session we are doing because we wanted to address the issues. I wanted to address the issues which you are facing while working on the sheet. एक चीज और मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि people what they are doing is they are going to the video, they are clicking on the link और वहीं चालू हो जा रहे हैं काम करना उसी गूगल शीट पे. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू डाउनलोड द गूगल शीट and then do it. You have to download the Google sheet and then work on it. आप लोग वहीं चालू मत हो जाइए, because if you do the changes in the particular sheet, then what will happen? The answer will be available to everyone. So you don't have to work on the Google sheet. You have to download the Google sheet and do it. Now, those who have come with some other name like welcome, please rename yourself and put your right name. iPhone, please rename yourself and put your name. Okay, because we are checking the attendance also. So welcome जो है, आपका welcome है मीटिंग में, लेकिन आप अपना सही नाम के साथ जुड़िए प्लीज. And this iPhone also, iPhone 14 or 15 you can mention. We are not able to understand which iPhone you are using. Okay, just on a lighter note, please put your name, rename yourself and put your names. Okay, या आप अपना नाम chat box में लिख दें, I will rename you. Okay. सो जनरली होता क्या है कि whenever we are using Zoom, तो जो हम डिफॉल्ट नेम रखते हैं उसी से वो ऐड कर देता है कोई भी मीटिंग हो. बट आई वांट पीपल टू पुट योर करेक्ट नेम एंड then come. So I Yeah, hi, I'm sorry, but I was not getting the option of renaming myself. not a problem. Can you just speak your name? I will rename you. I'm Sunita. Smita. Okay. Sunita. Sunita. Okay. Yeah. Thank you. I have changed your name. And who is welcome? Can you speak your name, please? Or type your name? Sagar. Okay, Sagar. So there is an option like when you go to your name and three dots will appear, then you can open that and you can change your name also. Okay. Now, what we need to do is we will discuss first how to download the file. Okay, I'm taking one by one. I will take all your doubts. ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है. उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो डाउट है. ठीक है, ये सेशन डाउट सेशन क्लियरिंग सेशन है. सो नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन and I'm showing the entire process that you have to do. Okay, many people must have done it, but those who are facing problems, I will show you everything. So just be with me and be active in the chat box. Okay, now see, this is my channel. You have to go to YouTube. Okay, so today there was a glitch and we could not upload the video on time, but from tomorrow at 6 o'clock, not before that, but 6 o'clock, I will be uploading the video on my channel. Okay, so what you need to do is you need to go to YouTube and you can put Alok Sethi, because from tomorrow we will not post the video link in the group. Okay, so if you have subscribed to my channel and if you have hit the bell icon, you will directly get a notification whenever any new video is uploaded. Okay, so
this is my channel. Now you will see latest from Sialok City, and this is the latest video I put, that is Excel challenge day 2. Now you will click on it. So when you click on the Excel challenge day 2, you will reach the video, correct? Now after opening the video, जब आप वीडियो पे आ जाएंगे, you have to go to the description, you have to watch the video, you have to go to the description. What you will see in the description is the first link is the link to download the Excel file and complete the task. Okay. Now you click on this link. Now when you click on this link, it will open into another browser. एक नया browser खुलेगा और वहां पे आपको Google Sheet open होके दिखाई देगी. ठीक है. So you will see a Google Sheet. Uh, I will discuss the sheets also. I will discuss all the problems. First, I'm explaining the process. So just give me 5 minutes. Let me complete this, and definitely we will come to Excel problems then. Okay. So now what people are doing is, this is the Excel challenge. Now there are 3 sheets. This is explanation where I've put all the formulas. This is the data where I've explained how to use the data. Okay. You can see. And the third sheet is the task sheet. Now, what people are doing is they are coming to this sheet and they are starting writing the formula. Don't do this, boss. Don't do this. You're not supposed to work on this sheet. This sheet is to be downloaded. इसको download करना है. इसमें चालू नहीं हो जाना है. So what we need to do is you need to click on file menu and click on download. Click on download, and in the download you will get an option of Microsoft Excel. Download this file. Once it is downloaded, you will see this file. It is downloaded. Now you will open in Excel and easily work on this file. Okay, I am showing my Excel screen now, and you will be able to see the file. Is my Excel visible to everyone? Is the Excel visible to everyone? Yes, sir. Can you confirm, Aryan? Excel is visible? Yes, sir. Yes, yes. Okay, fine. So now, see, in this Excel, what you are supposed to do, once you have downloaded the Excel, you work on it. Now you will be able to, you have to put your name here first. So first you have to put your name. Okay. Then you have to put your email ID over here. Correct? So once you have put your name and email ID, the next thing before you start solving this sheet is to rename the file. So you go to file menu and go to save as, and you may save it on a desktop, or I will suggest कि create a folder with 21 days Excel challenge, और उसको उसमें आप 21 दिन की 21 फाइलें रख दो. जैसे आप created a folder of 21 days Excel challenge, I am keeping every file over there. So what you can do is you can go to any drive and you will create a folder. ठीक है, 21 days Excel challenge. ठीक है. And what you do is, this is day 2 EC, some families, Yalok City, November, and you put your name after this. Okay. Suppose I'm putting Aryan Gupta. So Aryan Gupta. Okay. And save this file. Now Aryan is working on this file. So this file is saved by Aryan's name. Now when you will upload this file, this will show that it is your file. Okay. Your name will be there, and on the file also your name will appear. So first thing that you have to do is to rename the file and put your name. Am I making it clear? तो ये आपको नाम चेंज करना है. पहली चीज तो ये करनी है आपको. ठीक है. वंस यू चेंज द नेम, नाम बदलने के बाद आप इस शीट पे कहीं पे भी क्लिक करके कुछ करना चाहेंगे. अभी मैंने यहाँ से प्रोटेक्शन हटा दिया था, एड केप्ट प्रोटेक्शन. ठीक है. देखिए यहाँ पर तो ये प्रोटेक्शन आपको दिखेंगे, लेकिन आई हैव रिमूव्ड all the protection, so you will be able to change anything. Now when you come to this, this is the illustration that I've done. यहाँ पे मैंने फॉर्मुलेज लगा रखे हैं, समझा रखा है कैसे किया है मैंने. वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू कम टू द टास्क शीट एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. ठीक है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, टोटल यूनिट सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. So I'm asking, okay, what is the total number of units sold in the month of January? ठीक है. Now let us solve this. Okay. अच्छा, इसके बाद मैं आपको पहले प्रोसेस समझाता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे. हम डे 1 को सॉल्व करेंगे, फिर डे 2 को भी करेंगे. ठीक है. So let me close this. So once you do this, now what's next?
मान लीजिए ये कंप्लीट हो गई है फाइल, तो व्हाट नेक्स्ट, यू विल क्लोज दिस ऑल्सो, यू विल कम टू द वीडियो अगेन, उसी वीडियो पे हम आएंगे, यहाँ पर लिंक दे रखा है, लिंक टू अपलोड द कंप्लीटेड असाइनमेंट फाइल। सो यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट अ गूगल फॉर्म। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे इंस्टा आईडी अगर है तो लिख दें, नहीं है तो एनए लिख दें, लिंक्डइन प्रोफाइल है तो लिख दें, नहीं तो एनए लिख दें। और यहाँ पर यू विल गेट, दिस इज एक्चुअली दिस शुड बी डे टू, आई विल मेक दैट चेंजेस, बट आपको यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड करनी है डे टू वाली। तो यहाँ पर यू विल क्लिक ऑन दिस एड फाइल, इट विल गिव यू द ऑप्शन टू सेलेक्ट द फाइल। तो जहां पर आपने फोल्डर बना रखा है एक्सेल 21 डेज चैलेंज का, वहां से आप फाइल सिलेक्ट करेंगे और फाइल अपलोड करके सबमिट कर देंगे। दिस इज द टास्क वन, ये पूरा टास्क वन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने वीडियो देखा, वीडियो देख के एक्सेल डाउनलोड करी, एक्सेल डाउनलोड करके उसको कंप्लीट करा टास्क, और उसको पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपने उसको अपलोड कर दिया। दिस इज टास्क वन विच इज डन। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू गो टू योर इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आलोक, आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग। ये जो अभी जी आपने ये जो अभी जी लिंक पे बताया ना, अपलोड करने के लिए, जी जी। इसमें आज सेकंड डे में भी डे वन लिखा हुआ था। सो हाँ, यू वो हैव, मैं करेक्शन कर दूंगा, एक्चुअली वो हाँ लिंक हाँ, हमने नहीं, एक ही बना। जस्ट जस्ट आपको बताने की जरूरत थी। और नो नो नो, आई गॉट इट, आई गॉट दिस थिंग दैट देयर इज सम इशू, तो वो वी विल रिजॉल्व इट इट इज नॉट अ उसमें। मेजर इश्यू। वो आप उसको बस डे वन की जगह रोज अगर करना है, या तो डे हटा दो, और या डे वन टू डे टू रोज करना पड़ेगा। या वी विल रिमूव द डे, वी विल रिमूव द डे, ठीक क्योंकि है। वो सेम लिंक ही रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। हाँ, ओके, वही वही वही, डे का जरूरत नहीं है। राइट राइट राइट। नाउ आई थिंक आई प्रेस सम रॉन्ग की, और ये मेरी स्क्रीन जो है वो डुप्लीकेट हो गई। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सॉल्व दिस इशू। अच्छा, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन, जब तक कि आई एम रिजॉल्विंग दिस इशू ऑफ duplicate screen, if you want to ask anything, if you any doubts you have relating to what task is to be done, not excel पे हम आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। Yeah, hi, Alok. I have a question. यस प्लीज। So, is this mandatory that I have to go to Instagram and LinkedIn and put in the information? Can I not be a participant without doing all that? Not a problem. See, the idea behind doing is that you share your work or the work that we are doing with your connections. So if you do, it's okay. If you are not comfortable in doing this, if you don't want to do it on Instagram, if you want to do it on LinkedIn also, you can do that. On LinkedIn, what you are supposed to do is I will be sharing a post in the group. You have to just go to that post and share your feedback, share your comments on like what you learned from this video and all, because there will be a video link on the LinkedIn. Okay, so if you don't want to do on Instagram, it's okay, because see, when you put on Instagram, you tag me, I share it on in my story. So the people who are following you on Insta, they will get inspired that you are learning something and they might also join in. So that is the whole objective. And secondly, we also feel motivated that yes, we have to do this. So that is why I have included all these things in my challenges. But if you don't want to do it, it's absolutely perfect, I don't mind it. And you can So maybe once just the 21 days are over, then maybe give, every day it for me would be, because I'm trying to manage quite a lot of stuff, and not to stay away from the learning of it, right? I So understand, I after the understand. day 21 day period, See, then we see, can I put will in, tell yeah. you one more thing, that most of the participants are students. Okay, so in this challenge there are professionals also, there are students also, and like a lot of mixed crowd is there. So students feel motivated. So for them, for their this thing, I had put this Instagram and LinkedIn. For professionals, if you want to just stay with the learnings, what you can do is you can just complete the task one and that's it. Don't do Right. anything. Don't share it on Okay. LinkedIn. Once Right. you Thank you so have much. completed the 21 days, you can share all your summary of 21 days in one post. That is also fine. Right. Thank you so much. Yeah. Okay. And yeah, so coming back to the
posting on Instagram and LinkedIn. Okay, so on Instagram, what you have to do is simply you have to just open your Instagram, take a picture of you, the sheet which you have solved. So I'm sharing my screen again, and I'm sharing my Excel. Okay, and just give me one moment. See why, again, coming to there are two aspects of looking at it. Sometimes there is a valid point that we don't want the learning to get impacted because of the sharing it here and there. But there are two aspects of it, that when you do something continuously for 7 days, 14 days, 21 days, okay, then you start getting what you can say, a recognition from the society or from the people. Okay, learning is personal, like what I'm doing, what I'm learning is personal, but you can inspire others also to learn. Okay, but if you want to keep it to yourself, you need not share anything. That is also okay. And sometimes to keep ourselves motivated also, like I personally post everything on my social medias or my status because I want to keep myself motivated. Suppose I'm going for a workout, so one day I will go, second day I might not go, third day I might not go. But if I made a habit that every day I'll put a selfie or every day I'll put a quote, then it will be a motivation कि यार ये डालना है, आज नहीं किया तो कर लेते हैं. तो it is one aspect of it. Now coming to the task, coming to the Excel sheet and discussing it, क्योंकि वो important है, उस पे आते हैं. और people those who are active on Instagram and they can post, they can today I have not posted the poll on Instagram today. Okay, I will post it now because I was also busy. I could not post it. I had posted the video, and on the video you can do. Poll is basically a quiz related to the task that I've given. Okay, so I think shall we start with day one file first to discuss the day one count functions? Everyone comfortable with that? If you have not solved day one, then also you can see this, okay, and you can solve it because the idea is learning. So I'm opening the day one file, and let's discuss day one, and then we'll discuss day two. It will take 10-15 minutes, not more than that. So now this was the task for day one. I hope my screen is visible. Excel screen is visible to everyone. Alok, one more thing. Yes, Yesterday, sir. your poll was not on Insta; it was on LinkedIn, if I'm not wrong, and I had filled it. So, your poll is on LinkedIn or on Insta? No. My poll is on LinkedIn only. On Insta, I'm not posting anything. Insta, you have to post and tag me. On LinkedIn, I created a post on for second day challenge. And yesterday, I put a poll through Excel vibes, like a questionnaire kind of thing for count function. So today, I did not create a poll. But that is what I said. Just now you said a poll on Insta. So, therefore, I just wanted to correct myself. poll on LinkedIn, not Insta. Sorry. Yes. So yesterday you mean to say yesterday there was a poll. Today there will not be any poll. Today there will be. I will do it because I did not create a poll. I was not using my No laptop that problem. time. I mean, if let me tell you that you are really already worked up so much. If you are, yeah. So if you have not done it, no problem. You can do it tomorrow. I mean, I don't mean to say that you do it Yeah. every day. Actually, Whatever you can this manage. is something which I have started because I wanted to test my consistency, whether I'm So consistent in doing things or not. you are more than consistent. Not to take more time. What is more important, as for me, in this 21-day challenge, is to learn the functions of Excel, right? And Correct. that should be the main focus. Other things are just subsidiary things, and things like byproducts. Sure. Definitely. Yes, the focus is definitely on learning only, and we will keep it to learning. Okay. And the poll was also a part of learning only because whatever you learned, you have to test it also. So the poll is basically for testing your knowledge. No, Okay. it is a lot of fun. Yesterday I took a help from that boy. What's his name? I mean, Aryan, I guess. Aryan helped Yes. me a lot, and it was real fun. Going to Instagram and posting, going to LinkedIn and doing a poll, and all that is real fun, no doubt about it.
Not a problem. Now, let us discuss the task, because many people would be waiting for it. Okay, so now this is the first day one task. That day one we had discussed about count function. Okay, so I will quickly show you what was the correct answers, and then you can check. I will not be able to most check most of the sheets, but my team would be doing it. I have a team of students, they will be doing it, and once a week or maybe on Sunday we will share your feedback also on your email. Okay, so whatever you are doing is worth it. Okay, so now, how many times sales has been made in the month of April? Now, anyone would like to tell me okay, which function we have to use here? Count if, How sir. many times sale has been made in the month of April? Count ifs, because there is a condition here. Count if. Yeah, Count and if some people told me that there is a they were not getting how to rename, how to name a range. ठीक है, तो ये important है. Everyone pay attention to this. Let me explain कि how you have to name a range and what does it mean. So if I put a formula of count if, ठीक है, so what I need to do is, okay, so this is protected. Let me unprotect it. And I will also show you like how to apply protection. So it's very simple. First, let me first complete this. So count if, and now I want to select a range of month. So I will have to start from here. And as Narendra ji, you were saying that ये जब blank आता है ना, वहां पे जाके रुक जाता है. ठीक है. Then again you have to go down, and then you reach the last row and you close the bracket. And this is the range. We have to give the criteria also. So criteria was April. So I will select one cell which is containing April. कोई भी एक cell ले लेंगे जहां पे April लिख के आ रहा है, and we will close this. So the correct answer was 25. Is it? yes, sir. But it is not the right answer. Let me tell you why. Okay. Everyone must have got 25, but there were few people who could get the right answer. I got And 14. I got 14. you got 14. My answer I can see is 14. No, so there is some problem. Now, you can check the range. See, the range which I put is C11 to C304. So if you are getting 14, that means the range is wrong, probably. Okay, everyone, 25. Have you understood how we got 25? Yes, I put 11 to 102, so it should be 304 actually. I think. Yes, it should be 304 because वो the वो वो जो कंट्रोल शिफ्ट वाला इश्यू था ना, वही वही हुआ है. यही बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा था कि वो एक वहां पहले ब्लैंक पे ले जाके रोक देता है और हम उसके आगे जाते नहीं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है. नाउ द बेस्ट वे टू डू वर्क विद दिस. सही करने पे 25 आ रहा है. सही करने पे 25 आ रहा है. करेक्ट, परफेक्ट. नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस? बेस्ट वे इज कि आप क्या करिए, दो तरीके हैं इसको करने के. तो वी विल सेलेक्ट द टेबल फर्स्ट. वी विल सेलेक्ट द एंटायर टेबल. ये मैंने मैन्युअली सेलेक्ट करा है, लाइक होल्डिंग द कंट्रोल की एंड सेलेक्टिंग द एंटायर टेबल. ओके, और द टच पैड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. either you can go to you can convert this into a table. Now people would say कि ये तो table ही है, but it is not a table. When you convert this into a table, you have to press Control T. Control T will create a table, and now this is a table. Okay, this is called a table in Excel. So यहाँ पे क्या हुआ, filter आ गए और ये row बन के आ गए. ठीक है. Now what is the benefit of doing it? Now the benefit is this table has got a name now. This table has got a name. Now let us see what is the name of this table. So when I select this table, and again I have to select the entire table till the end. This name is table 1. इस table का नाम है table 1. Now, let me rename this name. Let me put some other name, and I will call it as a data table. Okay, DT. I put this name as DT. I've changed the name of this table to DT. And if I want to confirm whether the name has been changed or not, I can go to table design, and it is still showing table 1. I can write down DT over here and press enter. This now already exists. Okay, so we can say data. Okay, I've called this as data. Now see what will happen. What is the benefit of doing it? The benefit is when I'm writing the function count if,
Now I need not select the column month. I will write data and my entire table gets selected. Are you understanding what is happening? I have written data and the entire table got selected, but I wanted to select only month. So I will open a square bracket and now I will type month. So now my entire month column is selected. Now which month I want? I want April. So I will type April, or you can select the April month from the list and close it, and we are getting 25. Are you all with me? Can everyone just confirm in the comment in the chat box if you have understood this? Yes, sir. Yes. Okay, so we have just given our table, we have converted into a table, and we are uh, putting the table name and the column name. Okay. Now, why the answer 25 is wrong? Because when you see, when I filter this on April, see, there is a trick over. There is a trick that two cells are empty. Two cells are empty. Can you see these two cells are blank? I am just highlighting them. This is a blank cell and this is a blank cell. So the question was, how many times sales have been made in the month of April? But there were two places where there was no value written. No value written means no sales has happened. Here, there was one student of mine who could answer this correctly, who could catch me. And yes, welcome. Whosoever is welcome, you can write your name. So getting 23 here, yes. So 23 is the right answer, everyone. But how to get this? ये filter करके किया हमने, लेकिन how to do this? Vedika, would you like to answer? At last we can put like like shift plus smaller than symbol and So get sales. I That will don't be want the empty cell to be counted in the sales column. I want the month to be April and the sales column should have some units. Okay. So I cannot use sum if here. What I have to use, which function I have to use here? So count it first and then we subtract and then we'll use countifs as well. Okay, count if first and then We'll put a minus sign and then we'll use the countifs to count the empty blanks as well. correct. So first I will say count if and I will again do this data and month, comma, and April. Okay, so this will give us 25, right? But after this, we will minus what? Count A or count blank. We can use count blank and we can find out is there any blank in the sales. So I will say data and sales. No, sir, Sales it will units. go wrong Why? because in the entire data, since we have put the count blank option, so it will count all the entire blanks, whether it's of April month, May month, June, each month. Okay, But we correct. want the blanks of April. Correct. So then I The put one count like ifs. in chart. I put one The formula count in chart. ifs. sorry, yes, what to do? So we will use count ifs and then we Yes, will yes. write So the someone same has thing. given yes. So count ifs we need to use, and then first we have to see April, and there is a uh yeah, not empty cell ka symbol. I will just copy this and I will put it to make it simple. Okay. So let me show you how it is to be done. And this was advanced actually. So I'm pasting the formula. So this is the formula for getting the right answer. So count if C11 to C304 is the range, April, and F11 to F304 is the sales, and we want to count the non-empty. So this symbol, the greater than and less than sign put together in inverted comma represent non-empty cells. So it is giving me 23.
So suppose if I remove the count ifs and if I put count only, and if I remove the first element, okay, and if I put this, what I'm getting is 281. So that means there are 281 empty cells in this, or non-empty cells, sorry. So out of 304, there are 281 cells which are non-empty. Okay, so this is and this is empty cells. So there are 13 empty cells. Are you understanding, everyone? So when you find out the empty cells, you just give the range and put inverted commas. You will get the empty cells, count of empty cells. And if you don't want to get the empty cells, you want to count only the non-empty cells, you can put this and you will get the non-empty cells. Now I wanted to count April along with the non-empty cells. So that is why I have to use what? Countifs. And first we will select the C11 to C304. And then I will type April. Okay, so let us move to the next one now. How many sales have happened on the day 6 and month July? Day 6 and month July. So again, count ifs we have to use here also. So we will say is equal to count ifs. The first criteria is the date. So I will select data and date column. So here is the date column, and from the date I want to pick 6, and from the month. So again date, data and month. From the month I want to pick up what? July. So what is the right answer, everyone? 2. Are you all getting 2? Yes. Yes. Are you all getting 2? Yes. Great. Third one. How many empty cells are there in the entire data? So we wanted to find out the empty cells. So to count the empty cells, we have to use count blank, and we'll select the entire table. So I will just type in data and close it. So the correct answer was 29. Is it 29, everyone? Is it 29? Yes, sir. Yes. So instead of writing yes, you can write 29. Yes, 29. Okay, next, number of sales made in 22. Now you put your answer and let me see if I'm getting the same answer. Put your answer for this one. Number of sales made in 22. Number of sales made in 22 मतलब 22 कितनी बार आ रहा है ईयर कॉलम में. सो और वो ब्लैंक वाला भी ध्यान रखना है हमारे को कि 22 के सामने सेल्स यूनिट्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो विदाउट ब्लैंक किया होगा आप लोगों ने. सो काउंटिव एंड डेटा एंड ईयर में आई वांट 22. So my answer is 146. Are you also getting 146? 142. 142 is the right answer. 277 is not the right answer. 277, Kirtarth and Rahul, is not the right answer. Yes, 146. 146 also is not the right answer. Okay. So सब लोग को लगा अरे काउंट तो हमें बहुत अच्छे से आ गया है, बट इट्स नॉट दैट इजी. ओके, चलिए, तो नाउ व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट? काउंट इफ्स, comma, and we'll put the data and sales column, and in the sales column we'll put this again, data and sales unit, sorry. So 142, yes, 142 is now the right answer. Last question. How many times sales have been made in the made of motherboard in July 23 by Jeet? So there are 4 conditions here. One is the product motherboard, second is the month July, third is the year 23, and fourth is Jeet. So we have to write count ifs and 4 times. 0, correct, 0 is the right answer. 0 is the right answer. जब 0 आता है तो लोगों को लगता है अरे ये सही किया है हमने, बट यस, एक्चुअली में 0 is the right answer. So let me put this and then we'll move to the sum wala family. I hope you liked the challenge and the questions I put. This all I have designed by myself. Okay, data also I have taken dummy data, created dummy data and created. So I hope you liked the concept and the functions, the way I put it. So the first criteria is what? Parts.
So we'll write parts, comma. In the parts, I want to find out motherboard, so I will select motherboard from the table itself. Secondly, I want to find July, so I will select data and then month, comma. In the month, I will select July, comma. Then year, so data, year, comma. Year में I will select 23, comma. Salesman. So first you will write data, bracket open, salesman. And in the salesman, finally we select Jeet. So we will write Jeet, J-E-E-T in capital. And here you go. And the answer is 0. 0 is the right answer. So this was day 1, my friends, and it was a challenge. Like this, these are the right answer: 23, 2, 29, 142, and 0. Okay. So this is day 1, count functions, all the questions. We need to put countifs with if error. Why if error? 17 किसका आ रहा है? कौन से वाले में 17 आ रहा है? लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे. If error, if you put, so if it giving some error, it will give anything else. Last should not be 17, it should be 0. You have to recheck it again. Okay, you have to check that again. So what I'm doing is I'm just copying this formula in the chat. Those who are not getting the answer, they can copy paste and check. सर वैल्यू एरर आ रहा है. किसमें वैल्यू एरर आ रहा है? कहाँ वैल्यू एरर आ रहा है? कैन यू अनम्यूट एंड आंसर? लास्ट वाले में वैल्यू एरर आ रहा है, मतलब कुछ आपने सिंटेक्स लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, या तो जीत आपने स्मॉल में लिखा होगा या फिर कुछ ऐसा किया होगा. 0 आएगा, वैल्यू एरर तो नहीं आना चाहिए. ठीक है, चेक योर शीट एंड चेक इट अगेन. ठीक है, कुछ ना कुछ टाइपो एरर हुआ होगा. नाउ लेट अस कम टू द day 2 challenge, that is some functions. Let us discuss that. Can you do from this type count tips E, G? Yes, you can select anything first. कोई भी कॉलम आप पहले ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं हम जैसे आपने किया है. You will get the right answer. Answer is 0. You have to figure out how to get 0. चलिए, now let us start with this sum function. Okay, so the first question for today's task was total number of units in the month of January. So total number of units sold in the month of January. So what should I use here, guys? What should I use here? SUMIF, is it? SUMIF. Yes. And range. So in the range, I will select month. So I will select month, comma, criteria. Criteria में January. So I'll type January. And the answer is 0. No. Sorry, you have to give the sum range also. The sum range is the sales units ka range. So what is the answer you are getting? Can you put it in the chat box? What is the answer you are getting? Is it 60,800? Yes, Vedika, correct. 60,800. Priyansh is also right. Rahul also right. 60,800 is the right answer. Okay. 60,800 सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. चलिए, अभी देखिए, आपने एक चीज नोट करी होगी. मैंने आज जब फॉर्मूला लगाया, आई एम नॉट टाइपिंग डेटा और टेबल, आई एम जस्ट सिंपली टाइपिंग द नेम्स ऑफ द कॉलम्स एंड आई एम गेटिंग द आंसर. ये कैसे है? कैन एनीवन टेल मी ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या टाइप द नेम ऑफ द Control कॉलम Shift. एंड Control Shift 3. यस. हर्षल, हु इज दिस? हर्षल? Sagar. हाँ, सागर. Yes. Welcome me just. Okay, okay, great. So now see, those who don't know, first you have to select the table. पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे एक बार, और कंट्रोल शिफ्ट F3. ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया है वैसे. तो आप इसको करके टॉप रो में करेंगे, ओके करेंगे, तो इट विल क्रिएट अ नेम रेंज. देखिए, आपको फॉर्मूला में जाएंगे आप,
और नेम मैनेजर पे जाएंगे तो इन सब के नाम दिखेंगे। ये 2 बार हमने बना दिए अभी, तो इसलिए 2 बार दिखा दिए इसने। ठीक है, तो सारे नाम लिखे हैं, तो कॉलम के नाम से आपको लिख देना है। हमने टेबल नहीं बनाया, बिना टेबल बनाए कॉलम के नाम को रेंज में कन्वर्ट कर दिया, रेंज को कॉलम के नाम से इंडिकेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ 21 रुपीज। सम पीपल वर सेइंग कि इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ नजर नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ है। टोटल यूनिट सोल्ड एट द रेट पर यूनिट ऑफ 21 की रेट पे कितना यूनिट सेल हुआ है उसका टोटल निकालना है। तो विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड अगेन। While typing the column name, two options were coming: worksheet and workbook. So we have to select worksheet only, not workbook. 45,500 is done. Sum if, yes, Nitin, you're right. Sum if is to be used, and let us see what answer do we get. So you can type your answers if you have solved this sum if, and then I will take the rate per unit wala. So workbook or worksheet. So the rate per unit is in different sheets also. Now we will say worksheet क्योंकि हमें ये वाला लेना है, comma, and then we will take criteria. Criteria is 21, so I will select 21 from here, comma, and then what we want to take the sales wala units ka total, worksheet. 45,500 is the right answer. 45,500 is the right answer. Third question was total units sold by LED of LED by Jeet in August. Which function to be used here? कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है, तो सम इफ्स काम मिलेंगे। यस, क्या आंसर आ रहा है आपका? तीसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। व्हाट इज द आंसर फॉर द थर्ड वन? सम इफ्स का, सम इफ्स का सम रेंज, सम रेंज में विल सिलेक्ट सम सेल्स वाला कॉलम, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 विल बी व्हाट? आलोक, पार्ट्स। जस्ट अ सेकेंड, यस, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें सम इफ आपने बोला ना, हाँ सम इफ बोला था, बिल्कुल तो एक ही कंडीशन मैंने थी। मैंने सम इफ्स यूज किया तब भी मेरा आंसर सही आया, ये कहना चाह रहा हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है, आप उस पहले वाले के लिए कह रहे थे, तो पहले वाले में सम इफ्स में क्या होता है कि सेकंड थर्ड क्राइटेरिया डालना जरूरी नहीं है, तो यू कैन यूज सम इफ्स आल्सो इन प्लेस ऑफ सम इफ। था। या दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट। या सो इट इज गुड फॉर एवरीवन टू नो फोर्टी कि फाइव यू थाउजेंड कैन फाइव यूज, हंड्रेड 45,500 वाला जो क्वेश्चन है ना। उसको सम इफ से भी कर सकते हैं, ये आप हाँ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। थैंक राइट राइट। यू। बिकॉज अच्छा, जस्ट टू एक्सपैंड दैट, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए, मेनी पीपल डोंट नो दिस, कि व्हेन यू सी द दिस इज दीज आर द हेल्पर्स, तो सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, उसके बाद देखिए कर्ली ब्रैकेट लग गया, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है दीज आर ऑप्शनल। दैट मीन्स इफ यू पुट ओनली 1 क्राइटेरिया इट विल गिव यू द सम। तो सम इफ्स का इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्राइटेरिया लिखने ही लिखने हैं। थैंक यू वन सेकेंड, थैंक यू वन सेकेंड। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने कल क्वेश्चन रेज किया था, आज मेरे को आंसर मिल गया, थैंक यू। ये हेल्पर्स जो होते हैं ना, दे आर जस्ट ब्यूटीफुल, यू नो। मतलब अगर आपका बताया हुआ भूल भी जाते हैं तो यहाँ ये याद दिला देता थैंक यू। हाँ, तो ये एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, जिस भी फॉर्मूला में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, इसका मतलब ये है कि ये हेल्पर है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब दे आर ऑप्शनल वेदर यू वांट टू पुट इट और डोंट वांट टू पुट इट। चलिए, नाउ लेट्स गो आगे। और हम भी तक हमने क्या ले लिया था? पार्ट्स ले लिए थे। पार्ट्स में से आई वांटेड एलईडी, सो आई विल सेलेक्ट एलईडी। एलईडी के बाद कॉमा लगाते हैं, एंड उसके बाद चाहिए मुझे जीत, तो जीत है सेल्समैन के अंदर, तो सेल्समैन वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एंड देन लेट अस सेलेक्ट जीत, विल टाइप जीत बिकॉज जीत नीचे है काफी, कॉमा। उसके बाद में हमें चाहिए अगस्त, सो वी विल सेलेक्ट मंथ, कॉमा, एंड वी विल सेलेक्ट अगस्त मंथ। अगस्त दिख रहा है क्या कहीं मुझे? अगस्त, एंड क्लोज द ब्रैकेट। So the answer that I'm getting is 22,800. Is it the right answer, everyone? 22,800. Are you all getting 22,800? See, you have to be थोड़ा सा एक्टिव, मतलब 23,300 यूजिंग मैनेजर। और ये क्या बोल रहा है? 22,800। यस आर्यन, यू हैव गॉटिंग दिस आंसर। है। मेरा भी प्रियांश 23 सिंह, ट्रेडिशनल मेथड से 22,800 आ रहा है, नेम मैनेजर से 23,300 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरा एक भी ही 23। ट्रेडिशनल लो या वो लो, फंक्शन तो सेम ही रहेगा।
You must have put something wrong. You send me the formula that you put. I will tell you what mistake you have done. ठीक है, आप मुझे भेज देना, अलग से पिंग कर देना मुझे शीट को. नाउ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ प्रोसेसर बाय माइक इन December 22. ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. इसका आंसर बता दो एवरीवन, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस वन. 14,100. 14,100. Are you getting the answer of 14,100 here? You can check that. I'm not solving to save time. ठीक है. Last wala was very tough. Could anyone do the last one? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज मेड बाय एलन. अब देखिए, सेल्स इन रुपीज तो है ही नहीं ना हमारे पास डेटा में. हमारे पास रेट पर यूनिट है और सेल्स यूनिट्स हैं. सेल्स इन रुपीज मतलब, सेल्स इन रुपीज का मतलब होता है सेल्स इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट. टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स वो तो है ही नहीं. तो वो कैसा आएगा? वो आएगा सम प्रोडक्ट से. So when you do sum product, you can select the rate column first, rate column, comma, and then you can select the sales units wala column, and it will give you the total sales. ये देखिए, ये टोटल सेल्स का अमाउंट आ गया हमारे पास. टोटल सेल्स जो पूरी शीट में है, ये इतना अमाउंट है. ठीक है. इफ आई पुट कॉमास, यू विल बी एबल टू रीड इट प्रॉपरली. तो कॉमा के साथ में ये नंबर आ रहा है 1,77,99,500. ठीक है, 1,77,00,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस. लेकिन ये पूरे इसकी आ गई, हमें चाहिए एलन की सेल्स. नाउ हाउ डू आई फाइंड कि एलन ने कितना सेल किया है? कैन यू रिपीट अगेन? ओके, आई विल डू दैट. ओनली वी नीड टू टेक डेटा ऑफ एलन. यस, सो हाउ टू टेक डेटा ऑफ एलन? और ये मैंने कैसे किया? सम प्रोडक्ट निकाला है. आई यूज सम प्रोडक्ट. नाउ कैन वी यूज सम इफ एंड सम प्रोडक्ट टुगेदर? Can we apply sum if also in the case of sum product? भाई sum product का रिजल्ट में फिल्टर लगा के ln वाला ही ढूंढे सिर्फ, ऐसा कुछ हो सकता है? Just give it a thought. So someone has given me the answer. Sanjay, sum product rate sales unit ln. Okay, sum product में उन्होंने लिखा है salesman is equal to ln. Are you getting the answer from this, Sanjay? आपका आंसर आया है करके? लेट अस ट्राई दिस, व्हाट ही हैज गिवन. व्हाट ही हैज गिवन, लेट अस ट्राई. So he's saying some product and in bracket. What is this for? ये डबल डैश क्यों है? ये बाय एरर लिखा है. Okay, so salesman is equal to ln. So salesman is equal to ln rate per unit and sales units. Very good. But this is giving a name error. Are you getting the answer from this? Are you getting the answer from this? What he has done is he is trying to multiply all the three. मतलब रेट इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, सेल्स वन इज इक्वल टू ln. बट विल वी गेट द आंसर लाइक दिस? सर मैंने ये आंसर यूट्यूब पे देखा था. अच्छा, तो YouTube पे देखा तो था, लेकिन प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके देखा, फिर आंसर आ रहा ही नहीं है, सिर्फ नेम एरर यस आ रहा है. सर, एग्जीक्यूट हो गया सर. आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में डाला था. हाँ, अच्छा आपने डाला है. हम्म. इसी इसी फॉर्मूले से आया ये आंसर. यस सर, इसी फॉर्मूले से आया. एक मिनट, स्टार्टिंग में ये डबल डैश भी है इस फॉर्मूले में? या सर. Okay, let me try this because I was applying some different logic in Excel. सर ये डबल डैश का समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया. वो मेरे कॉपी पेस्ट Excel में वाला हो this गया is है. my Excel, this is not working actually. ये जो Okay. डबल डैश है, ये मेरे, this is something which I am seeing for the first time. ये मेरे भी पल्ले पड़ा नहीं ये कंसेप्ट. ठीक है, बट हाँ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्समैन में हमने एलन का फिल्टर लगाया है और फिर रेट ले ली और यूनिट्स ले ली. ठीक है, बट कैन वी डू दिस? वी नीड टू चेक. एनीवन हु इज गेटिंग? इट्स यूनिरी ऑपरेटर. ओके, डबल डैश. ओके, तो नितिन, विल वी गेट द आंसर फ्रॉम दिस?
Anyone, can you just copy this and paste in Excel and check if you are getting the answer from this function? Do we need to put some more brackets or something like this? No answer nahi aa raha. Okay, answer. Nitin, are you getting the answer for this? Nitin. Okay, what could be the other way? What could be the other way? I was suggesting sum if. क्या हम sum if लगा सकते हैं सम प्रोडक्ट के अंदर? सम if एंड रेंज में डाल देते हैं ये पूरा रेंज में कॉमा, और क्राइटेरिया में डाल देते हैं, सॉरी, रेंज में डालेंगे हम ये सेल्समैन, ठीक है, एंड इन द क्राइटेरिया आई विल राइट डाउन एलन, एंड इन द सम रेंज आई विल पुट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एंड लेट अस सी इफ वी गेट द आंसर. Sum if, wait, let me do it again. Sum if, and range में we'll put salesman वाला, comma, salesman में we'll put Alan. This is the criteria, and some range में I want to write some product. And then give the two columns, that is rate per unit, comma, the sales units. And let us try to get the answer. No, it is not taking that. There are some chats. No. Aryan. Aryan, did you get the answer from this? What's the correct answer for fourth question? Fourth question ka correct answer is 14,100 only, na? Isn't it? Fourth question ka answer 14,100. Let us solve the fourth question also. Number of units sold. See, fifth question ka there is one solution, but we are not getting the answer from this. 5,800 Vedika you are getting. Let us try this. So sold processor. So now we'll write down sum ifs, and we want in parts में हमें चाहिए processor. So we will select processor, comma, in the salesman I want mic. So I will type mic, and in the month I want December, and in the year I want 22. Year हो गया, month हो गया, mic हो गया, sales unit. So parts, sales units, sorry. Salesman. Okay, so first you have to give the sum range. Sorry, my mistake. I'm not giving the sum range. Sum range is sales units, sales unit worksheet, comma. So sales units we want to find out, then the part may we want processor, and salesman may we want mic. So salesman should be mic.
comma, month May, it should be December, and year May, it should be 22. 5800 is the right answer. Yes, 5800 is the right answer. Whosoever was mentioning 14100, गलत है भैया आपका. कंट्रोल शिफ्ट F3 कैसे काम करता है? ओके, कंट्रोल शिफ्ट F3 कैसे काम करेगा? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, even third is 23300. No, 23300. Okay, so someone was saying कि 23300 आ रहा है, but let us check third one also. Vedika, can you confirm what is the answer for third one? Vedika, can you confirm the answer for third one? So it's 20,800. 22800 ना? Yes, sir. हाँ, नरेंद्र जी नीड टू चेक 23300 आपका कुछ गड़बड़ किया है आपने शायद. कैन यू प्लीज चेक इट, है ना? बिकॉज 22800 इज द राइट So आंसर. by formula, it is coming 23,300 by formula, but the actual answer is 22,800. हाँ, राइट. सो हाउ कम 20? So 500 रुपए का को फर्क है because of the blank. There's a blank in the month ओके which is getting added over this. okay, right, maybe yes. So anyone who could come up with the last one, because basically we wanted to understand कि how do we get the total amount of sales made by Allen. We don't have the sales column actually. So sales column, to calculate the sales, we'll use some product, but for some product we want to get only the salesman if the salesman is Allen. So let me type like this only and see if it is working. We are getting a dash. Okay. Nitin, you are mentioning something. Now we are getting the answer. 954 500. Is it the right answer? 954 500. The last one. Okay, let us put a filter and check this. Let us put a filter in the data and check the answer. I think I have cracked this, and I can show you all how to do this. So we want to find out the sales made by Allen. Okay, so these are the sales made by Allen. Now suppose I want to multiply this column with this column. So first I select these cells, then I select these cells. Okay, so here what do you see is some average numerical count. Can we also get the option of multiplication? Okay, so what I'll do is I will copy this and I will paste it over here. Okay, now I will use some product either. So we will say is equal to some product, and this is my first array, this is my second array, and close it. Bingo. The right answer for the last one is 9,54,500. Finally, we have cracked the nut. So understood people, how did we get this answer? 9,54,500. ये कैसे आया? Yes. Now, those who could not understand, let me show you. There's something which is to be understood here, and a small trick over here. कि what you have to do is कि आपने some product के लिए rate लिया, sales लिया. अब salesman वाले column में, before you apply the salesman का filter, you have to put this double dash and put everything in bracket. Okay. Now suppose I want to find out the total sales by LED of LED. So once you are applying some product, okay, some product, before that you put double dash, okay. Or let us solve this elsewhere. This is the right answer. Now I am just showing one more task and then we will end this live session because it is more than 1 hour now. I hope you are enjoying
the session, those who are live, because there were 17 people, 16 are still there. So I hope you are liking it. चलिए लास्ट वाला देखते हैं हम, सम प्रोडक्ट. यस, थैंक यू वैदिका, थैंक यू कृतार्थ. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना सम प्रोडक्ट. और सम प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, सेल्स यूनिट लिखते हैं, सेल्स का यूनिट. और मैं लिखता हूँ रेट पर यूनिट. तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हो गया, ये टोटल सेल्स आ जाएगी. आई क्यों नहीं, रेट पर यूनिट, सेल्स मैन ले लिया हमने, सॉरी सेल्स मैन नहीं लेना था. सेल्स यूनिट्स. सो दिस इज द टोटल सेल्स, दिस इज ओके, दिस इज ऑल राइट. ये टोटल सेल्स है, लेकिन मुझे टोटल सेल्स चाहिए एलईडी का कितना सेल हुआ है, एलईडी का टोटल सेल्स क्या है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड वन मोर थिंग इज इक्वल टू कॉमा, और फिर आप लगाएंगे ये डबल डैश, and then you will write down you will write down the third variable. The third variable is the salesman, and you'll put it into bracket. ठीक है, salesman, sorry not salesman, we want product, parts, sorry. So parts, and is equal to part में I want led. And the led sale is 26,29,700. Can you all try this? 26,29,700. This is easy. Some product. Okay. Now let us see this. Also, what you are saying, logic is they put 0 in all other than Ellen, so it will give 0 in. Okay, there was some network issue at my end, I guess.
So I got logged off. Okay, so now I'm back. So we were discussing the last one, and we had got this answer. Even if can be used. Okay. So let me share my screen again. Let me share my screen again. So I like this way of getting the answer. So let us see this. Some product if so salesman may we have put ln. So if it is ln, then 1, else 0. So what it is doing is it is taking ln. Okay. So why 1 you have put Mr. Admin? What is the point of putting 1? So it will multiply 1. Okay. So wow, what a logic. Now let me try this. Let me show you how to do this. So is equals to sum product, and if we are putting if. So in the if we want to find out whether the salesman is ln or not. So whether the salesman is ln or not. So salesman is equal to ln. If the salesman is ln, then we'll give him 1, else 0. सो दिस इज वन वेरिएबल, दिस इज वन वेरिएबल, तो इसको हमने वन बना दिया. अब जहां जहां पे भी एल एन आएगा तो उसको लेंगे वन. उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए सेल्स इन यूनिट्स. सो विल सेल्स इन यूनिट्स. और उसके बाद हमें चाहिए सेल्स इन रेट, तो रेट पर यूनिट. वाओ. सो वी हैव टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. is to you. Okay, so we have completed our day 2 challenge. I've explained the day 2 challenge to everyone. Now any questions, anyone? We can take a question answer session now. Last 10 minutes, 5 minutes, whatever. किसी का कोई question है? Yes, sir, I have one query. Yes, yes, Rahul. Sir, actually, the last question was tough, so I was not able to do that. Now I understand how to do. So I'm a bit late in submitting today's task. So is it possible that right now I Not a can share? problem. See, the objective is learning, as were discussing. So there is no harsh and fast rule. I will give certificates to everyone. I will get course access also to everyone. Just complete it and upload it by 12 o'clock, by night also. The time we have kept time limit so that everyone is particular about submitting. But if you're not able to submit on time, I will extend it. Not a problem. करना जरूरी है. समय से कर लो तो अच्छा, नहीं भी होता है, थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो चल जाएगा. नॉट अ प्रॉब्लम. Okay, sir. Anyone else who is having any questions, any doubts, any trouble? Hello, Yes, am Priyansh. I audible, sir? Yes, you are audible. तो सर थर्ड क्वेश्चन में मैंने मतलब हाँ बोलिए. मैंने सर नेम मैनेजर यूज किया तो वही मेरा हाँ 500 का डिफरेंस आया ड्यू टू हाँ. ब्लैंक फील्ड. और जब मैंने मतलब नॉर्मल जो सेल रेंज को सिलेक्ट करके मैनुअली सेल रेंज टाइप करी तो उससे सर मेरा आंसर सही आया. तो सर उसके पीछे आपके क्या मैं आपको रीजन है? बताता हूँ क्या दिक्कत हुई होगी. आपका जो नेम मैनेजर में आपने वैल्यूज ली होंगी, नेम मैनेजर में वो उसने ब्लैंक तक ही ले लिया होगा. आपका जो नेम मैनेजर है, एक काम करिए, आप अपने फॉर्मूला बार में फॉर्मूला टैब पे जाइए. फॉर्मूला टैब में जाने के बाद नेम मैनेजर को ओपन करिए और यहाँ पे चेक करिए कि रेंज क्या दिखा रहा है. जैसे यहाँ पे रेफर्स टू जो आ रहा है, एक बार सब में चेक कर लो कि 304 एंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है. किसी में 304 से कम तो नहीं आ रहा है. या यहाँ पे जो स्टार्टिंग 11 है वो 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है. चेक हाँ दिस. सर 112304 ही है. सब में 304 है. हाँ. फिर तो आंसर में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए. मैं सर स्क्रीन शेयर करूँ एक बार? हाँ करिए करिए. आई विल मेक यू होस्ट, को होस्ट. यू कैन शेयर योर स्क्रीन. एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट्स? जब सर तक मेरे ये. भी थर्ड वाले में ये आ रहा है, रेंज हाँ सही है, तो भी वही आ रहा है. चलिए प्रियांश, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अब. हाँ सर. बताइए. आपका फॉर्मूला कहाँ? 23,300 वाला फॉर्मूले पे क्लिक करिए एक बार. इसको तो बंद कर दो, ये देख लिया मैंने. हाँ F2 करिए. सम सेल्स यूनिट्स.
ओके, पार्ट में एलईडी, सेल्समैन में जीत, मंथ में अगस्त। ओके, यू आर गेटिंग 500 लेस। अच्छा, एक काम करो, फिल्टर लगाओ अपने डेटा में, एक बार फिल्टर लगाइए डेटा में, और फिल्टर दिस एलईडी जीत एंड अगस्त, इसकी ऑडिट कर देते हैं अभी। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द सेल्स यूनिट्स। 22,800 आ रहा है। हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर यही है सर। हाँ करेक्ट आंसर यही है। तो चार ही ऐसे रोज हैं जिसमें कि 22,800 आना चाहिए, जीत का एलईडी अगस्त में जो सेल हुआ है। ठीक है, फिल्टर हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दो। अब आपका आंसर उसमें क्या आ रहा है, 23,300 आ रहा है। हाँ अच्छा, just give me 1 minute. I am requesting access to your screen. Just allow me the access. आपके यहाँ पे हाँ एक्सेस का ऑप्शन आ रहा होगा। Now let me write this formula एक बार देख लेता हूँ मैं भी लिख के कि क्या इश्यू है। So is equals to sum ifs we will put, and first thing we want to select is the sum range, that is units. So sales units, comma, parts में we will take LED, parts में we will take LED. So LED, LED. Okay, you type because it is taking time. आप टाइप करिए, कॉमा लगाइए, and put LED into capital letters in inverted commas में, हाँ, comma, then write down this salesman, हाँ, comma, and put Jeet, comma, then write down month, comma, and write down August. Close the bracket. 23,300, आंसर 22,800 है, 500 हाँ, एक्स्ट्रा आ रहा है आपका। ये सर मैंने नीचे नॉर्मल मतलब सेल रेंज हाँ सिलेक्ट हाँ, करके समझ गया, मैं फॉर्मूला समझ लगाया। गया, समझ सर गया, मेरे 500 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। सर लेकिन मेरे कोई भी ये और आंसर का आ या रहा तो इंक्लूड हो गया जीत में, 500 रुपीज का कोई सेल मे बी पॉसिबल। एक काम करिए, सेल्स के फिल्टर में 500 लगाना, एक बार 500 पे फिल्टर लगाना, सेल्स यूनिट्स पे फिल्टर लगाओ 500 पे। there सर would be some 500 technical issue. पार्ट्स में ब्लैंक है सर. हाँ, 1500 is blank in parts, but it is in the column of Jeet only. ओके, जस्ट सेलेक्ट 500, yeah, so in the part it is, हाँ, blank. Okay, so it is but it should take only LED, right? It should not take that blank. It is taking, this name range is taking blank also. But it should not have taken. But I also use the name range. तो उसमें तो उसने 22,800 ही दिया using the name range, not 23,500. So समझ में आया आपको what is happening? This 500 is getting included in your this thing, but it should not happen that way. एक काम करो, ये हार्ड डिस्क जो है, यहाँ ये जो 500 है, इस पे स्पेस, जस्ट पुट अ स्पेस ईयर, जहाँ ब्लैंक है नीचे हार्ड डिस्क के बाद नीचे, हाँ, जस्ट एंटर सम स्पेस एंड प्रेस एंटर, हाँ एंटर दबा दो। अब जाके एक बार चेक करो, इसको फिल्टर हटा दो, रिमूव द फिल्टर एंड रिफ्रेश दिस।
Still you are getting 23,300. Okay, just do one thing, do nothing. एक बार वापस से select करो formula को. Instead of writing LED, just select this LED from the parts. Just select one cell which is containing LED. And now press enter. Still 23,300. Share the Excel with me. I will do some research. अभी तो I Yes, sir. cannot say anything why you are getting 23,300. Yeah, share the file. Nitin, share the file to Nitin. Share the file in the group, in the Zoom chat. Okay, share your file in the Zoom chat, or maybe in the group also you can share. We will try to look at it. Okay, anyone else who is having any questions? If you are not having any questions, we can close this live for today. And I hope you are looking forward for day 3 also. Okay, if you have any problems, we will open the group. You can put it in the group also. Any suggestions if you would like to give for the conduct of the challenge or anything, you are most welcome to give your suggestions also. Okay, so with this, signing off, and thank you. सर डे 2 I don't, का रिजल्ट हम लोग को उसी लिंक से शेयर करना है. क्या कह रहे हैं? डे 2 का जो सबमिशन है वो वही से उसी लिंक से होगा जिसने डे 1 से किया था, जिस लिंक से डे 1 से सबमिट किया था गूगल. हाँ, उसी लिंक हाँ. से होगा, उसी लिंक से. लिंक वी आर नॉट चेंजिंग. वो एक्चुअली आई विल चेंज द नेम, टू दिस डे ओनली. तो डे 1, डे 2, डे 3 सबका सेम लिंक ही रहेगा आपको. तो यू कैन बुक मार्क दैट लिंक और यू कैन सेव दैट लिंक. सो यू हैव टू अपलोड फ्रॉम द सेम लिंक ओनली. ओके सर, थैंक यू या सर. ओके. Okay, so everyone, thank you for joining in, and see you tomorrow.